Good morning class. This video is for class 7 students, biology class, chapter number 3, photosynthesis. This is the third video of your chapter. In this video, we will be studying different types of activities that have been given in your class, that have been given in your chapter. So this is the first activity. In this activity, there is the demonstration that CO2 is necessary for photosynthesis. So in this activity, what we will be doing? We will be discussing how CO2 is necessary for photosynthesis. So what are the requirements for this experiment? 2 similar potted plants, 2 bell jars, watch glass, sodium hydroxide, NaHCO3, sodium carbonate, corks, delivery tubes, etc. So these all are the requirements. These things will be required during the experiment. The next is procedure. Now what is the procedure to perform this activity? The first step is take 2 similar potted plants which are nearly of the same size. What we have to do first? We have to take 2 potted plants. That means two plants in a pot. Similar plants in 2 different pots. Then we have to keep them in dark room for 3 days to destarch them. We have to, what was the destarching process known as? What was destarching? Destarching means removal of the starch. Okay. Why is this process important in the experiment? So that सारा स्टार्च जो है वो कंज्यूम हो जाए. प्लांट्स के अंदर अगर स्टार्च है तो वो सारा कंज्यूम हो जाए और जो भी स्टार्च फॉर्मेशन हो वो इस एक्सपेरिमेंट के दौरान ही हो. So we have to destarch them by keeping them in dark room for 3 days. The next step is cover both the plants with bell jars and label them as A and B. Then we have to label both the plants A and B and we have to cover them with the bell jars. The next is inside setup A keep NaHCO3, that is sodium bicarbonate. What we have to do in setup A, that is in the plant A, we have to keep sodium bicarbonate. What will it do? It will produce CO2. And what was the experiment? We have to demonstrate whether CO2 is necessary for photosynthesis or not. So in the next step, in the setup B, we keep sodium lime, that is NaOH. What do this NaOH does? This absorbs the CO2. Whatever CO2 will be produced by the plant, whatever CO2 will be present around the plant, it will absorb all the CO2. Next is use Vaseline to seal the bottom of the jars to the glass plates so that the setup becomes airtight. To make the setups airtight, we use Vaseline to seal the bottom. Now what is the next step? Keep both the setups in the sunlight at least for 6 hours. Now both the setups are kept in the sunlight. Next is perform the starch test on both the plants. Then the starch test is performed. What is starch test? Starch test is done by adding iodine solution to both the plants. So you see here in this diagram, the experiment has been shown. This is the setup A and this is setup B. What is done in this setup? In this setup, NaHCO3 has been added. This is the destroyed plant. And in this, NaOH solution has been. These both are the destarched plants. Okay, pot is covered with polythene, and here you see this is NaHCO3, and in this there is NaOH solution. And these both are kept in the bell jar and are sealed from the bottom and are kept in sunlight. So this is the experiment that proves that carbon dioxide is necessary for photosynthesis. How? Because we will see some observations. What are the observations that we will notice after this experiment is conducted? The first observation is the leaf of plant B, which contains NaOH, remains colorless, showing the absence of starch. What happens? ये सेटअप बी में क्या होता है, जिसमें हमारा NaOH सॉल्यूशन था, इसमें जो ये कलरलेस हो जाती है. ओके, दिस शोज दैट्स एब्सेंस ऑफ स्टार्च. ओके, the leaf of plant A which does not have NaOH turns blue black, showing the presence of starch. जब हम स्टार्च टेस्ट करते हैं यानी आयोडीन ऐड करते हैं तो हम आयोडीन का कलर, जब आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव होता है
तो उसमें कलर चेंज क्या होता है, ब्लू ब्लैक कलर चेंज हो जाता है। लेकिन जब हम सेटअप ए में देखेंगे जिसमें NaOH सॉल्यूशन प्रेजेंट था, NaOH ने क्या किया, सारा CO2 को एब्जॉर्ब कर लिया। ऑल द CO2 विद इन दिस जार विल बी एब्जॉर्ब बाय द प्लांट एंड व्हाट हैपन्स, CO यहाँ पे ये जो लीव्स हैं सेटअप बी में, बी प्लांट की, ये जो है कलरलेस हो जाएंगी। बट इन दिस सेटअप ए where we have used NaHCO3, what happens, it produces CO2। तो अभी यहाँ पे सराउंडिंग में CO2 है, so plant will keep on doing the photosynthesis process and so starch का formation होता रहेगा, और इस वजह से starch इसमें present है, तो starch test positive आएगा। That means the color of the green leaf changes into blue black color। What are the inferences that can be obtained from this experiment? The first is, since the CO2 was absorbed by NaOH in the case of plant B, therefore photosynthesis does not occur and there is no positive starch test. So what happened in plant B? Because NaOH has absorbed all the CO2 around the plant, so the photosynthesis now cannot take place, and so the starch test is negative. The next is, the normal photosynthesis process takes place in plant A in the presence of CO2. This means that CO2 is necessary for photosynthesis. What happens in plant A? Because of the presence of CO2, because of the presence of NaOH which has produced CO2, so the photosynthesis process has taken place, and so there is formation of starch, and thus the plant A shows positive starch test. So this was your activity first, to show whether CO2 is necessary for photosynthesis or not. The next activity is to demonstrate that chlorophyll is necessary for photosynthesis. This activity is conducted to demonstrate whether chlorophyll is necessary for photosynthesis। मतलब हम ये सारी एक्टिविटीज़ कर क्यों रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि क्या क्या ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंडक्ट करने के लिए। लाइक वी सॉ कि CO2 इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर कंडक्टिंग द फोटोसिंथेसिस। सिमिलरली इस एक्सपेरिमेंट के बाद हम ये कंक्लूजन ये निकालेंगे कि क्लोरोफिल इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। सो व्हाट इज़ द मेथड? फर्स्ट, take a plant which has variegated means partly green and partly white or yellow leaves। You must have seen these variegated leaves। कुछ plants ऐसे होते हैं जिनमें variegated leaves होते हैं, जैसे क्रॉटन और कॉलियस। ये plants इनमें कुछ पार्ट जो होता है लीफ का वो ग्रीन होता है और कुछ वाइट या येलो कलर का होता है। सो द ग्रीन पोर्शन कंटेन्स क्लोरोफिल वेयर एज द वाइट पोर्शन लैक्स क्लोरोफिल। ओके, वेरीगेटेड लीफ क्यों ले रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि हमें क्लोरोफिल की प्रेजेंस को बताना है, और क्लोरोफिल की प्रेजेंस यानी ग्रीन कलर। तो वेरीगेटेड लीव्स में कहीं कहीं ग्रीन कलर प्रेजेंट होता है और कहीं कहीं वाइट होती है लीफ। तो जहाँ ग्रीन कलर है वहाँ क्लोरोफिल है, और जहाँ वाइट है वहाँ क्लोरोफिल नहीं है। नेक्स्ट इज डिस्टार्च द प्लांट बाय कीपिंग इट इन डार्क फॉर 48 to 72 आवर्स। तो अप्रॉक्सीमेटली 3 दिन के लिए डिस्टार्च करने के लिए प्लांट को हम डार्क रूम में रखते हैं। वाई डिस्टार्चिंग इज़ इम्पॉर्टेंट? सो दैट एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हो और उस टाइम हमें पता चले कि स्टार्च बन रहा है या नहीं। लेटर, place the plant in sun for 2 days। Now after this we have to place the plant in sunlight for 2 days। Next, plug the variegated leaf and trace its outline on a sheet of paper to mark its green and non-green areas। Now the variegated leaf is plugged and kept on a paper, and then the green and the non-green areas are marked on this। Then boil the leaf in alcohol to remove the chlorophyll। Leaf will become decolorized। What happens on boiling the leaf in alcohol? It removes the chlorophyll, and because of the removal of chlorophyll, the leaf will become colorless। Wash the leaf with water to remove any chlorophyll sticking on it। So we will wash the leaf with water so that अगर कहीं थोड़ा बहुत chlorophyll sticked रह गया लीफ के ऊपर तो that is also removed। Then add a few drops of iodine solution on the leaf and observe। Now after this step you will be adding iodine solution to confirm the starch test। और फिर हमें क्या observe होगा? You see what are the observations?
White portion of the leaf does not turn blue-black on adding iodine, indicating absence of starch, while the other part, which was originally green, turns blue-black on adding iodine, indicating that starch is present in this inner part of the leaf. Now what happened? White portion जो है लीफ का वो जो है वो ब्लू ब्लैक में चेंज नहीं होगा ऑन एडिशन ऑफ आयोडीन. व्हेन आयोडीन इज एडेड इट डज नॉट चेंज इनटू ब्लू ब्लैक कलर. वाई? बिकॉज देयर इज़ द एब्सेंस ऑफ स्टार्च. वाइल जो बाकी पार्ट है लीफ का, जो ग्रीन पार्ट है ओरिजिनली ग्रीन था, वो टर्न हो जाएगा ब्लू ब्लैक कलर में ऑन एडिशन ऑफ आयोडीन, शोइंग द पॉजिटिव स्टार्च टेस्ट. So what conclusion can be obtained from this experiment? That starch is formed due to photosynthesis, and photosynthesis occurs in that portion of the leaf where chlorophyll is present. Hence, it can be said that chlorophyll is necessary for photosynthesis. So this is the experiment. Here is the diagram given for the experiment. This is the variegated leaf. You see there are some green portions and there are some white portions. What we do, we will trace this leaf on the पेपर पे इसको एक ड्रॉ कर लेंगे और ग्रीन और वाइट पोर्शंस को एज इट इज़ मार्क कर देंगे. देन वी विल डू, वी विल रिमूव द क्लोरोफिल फ्रॉम द लीफ बाय बॉइलिंग इट इन द अल्कोहल. ये बॉइलिंग वाटर है और ये हम अल्कोहल में, बॉयल अल्कोहल में नहीं करना है, बॉइलिंग वाटर में ही करना है, लेकिन अल्कोहल में लीफ को प्लेस करना है. लीफ को यहाँ प्लेस करने का क्या मकसद है? इससे क्लोरोफिल रिमूव करना. देन नेक्स्ट स्टेप इज़, यू सी इन यहाँ पे आयोडीन, जब यहाँ पे लीफ निकालेंगे यहाँ से तो लीफ कलरलेस हो जाएगी. दिस इज़ द डीकलराइज लीफ. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ऐड द आयोडीन सॉल्यूशन ऑन दिस लीफ. देन आयोडीन सॉल्यूशन यहाँ पे लीफ पे ऐड करेंगे. देन व्हाट हैपन्स, लीफ शोइंग द एरिया विच वॉज ओरिजिनली ग्रीन दैट गिव्स पॉजिटिव टेस्ट फॉर स्टार्च. नाउ ऑन दिस लीफ यू सी द एरिया, जो ग्रीन पोर्शन था वो ब्लू ब्लैक में चेंज हो गया. दिस शोज़ द पॉजिटिव टेस्ट फॉर स्टार्च. यानी यहाँ पे स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ है और यहाँ पे नहीं हुआ है. सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस एक्सपेरिमेंट एंड दिस वीडियो. The next activity we will be discussing in the next video. That is all for this class. Thank you.